had been, has been, have been. Ready guys? You guys are getting confused. Sir, where to use had been, where to use have been, and where to we use has been. So guys, try to understand guys. Has and have generally represent the present section, that is called present tense at present time. But we are talking about had, that shows past. तो निश्चित गाइस चैनल टा सब्सक्राइब जदि करना कर दिंतु एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ए लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट निश्चित देबे आपण मु जानि छी गाइस. सो कमिंग द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज गाइस हैव बीन और हैज बीन. एटा कोड बसुची. थिंक ऑफ द सिचुएशन गाइस. फॉर एग्जांपल मु जो माने वीडियो करूची कि आपण मानको वीडियो अपलोड करूची मु आपण मानको शिखौची. आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल द वीडियो. दैट मीन्स आई एम इनटू दिस टीचिंग प्रोफेशन. केते वर्ष हलानी ना मु सर 2012 रु अछि. फॉर एग्जांपल 2012 रु मु ट्रेनिंग सेक्शन में अछि. अबे भी चली छी, आगो को भी चलीबो. दैट मीन्स वन वर्क इज स्टार्टिंग इन द पास्ट and it is continuing right now, it's going on and it is expected to go on in the future. And it is taking regular breaks. That means the sokala 7 training start korchi. Yeah, it is continuing till 10 o'clock, 11 o'clock. And after that it is taking break. Again it is starting around 4 p.m. in the evening second slot. Again it is continuing till 8, 9 p.m. Again it is taking break. That means the work is starting, continuing, and it seems to be taking a pause. There's a break here. Again it is continuing. And again it seems like over and taking a pause. That means गोटे घटना घटुची किछि समय पे चालुची तापर टिके ब्रेक नउची पुणी किछि समय पे चालुची ब्रेक नउची आ एबे भी से जिंसला सेमती होची आगु को भी सेमती हो बोली एक्सपेक्टेशन अछि. दैट मीन्स मु कहि परबी आमो फॉर एग्जांपल 7 इयर्स हे गला इंग्लिश ट्रेनिंग दे आसुची. आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 7 years. I have been in training since 2012. I have been in training from 2012. That means guys मु 2012 मसीहारू ट्रेनिंग दे आसुची. बुझियला गाइस. I have been कहीं हैला कामटा चालुची मझिरे मझिरे ब्रेक नउची. That is have been format guys. Similarly मुझे के आमे माने ट्रेनिंग दे आसु ना we have been impacting training since 2013 रु आमे ट्रेनिंग इम्पैक्ट करी आसु. आमे जदि कहबे कि आपण 5 वर्ष होला क्रिकेट खेली आसुछंती. You have been playing cricket for 5 years. से माने 10 वर्ष होला वीडियो डिजाइन करी आसुछंती. They have been designing videos for 10 years. They have been designing videos from 2009. So guys, everybody understood guys mu kon कहली. That means I am talking about I am talking about we, I am talking about you, or else I am talking about they. So in these type of cases we are using have been. Okay, now comes to he, say 2 घंटा वाला क्रिकेट खेलुछ. He has been been playing cricket for 2 hours. जानी पड़ले अरे से घंटे हेलेनी रोषेई करुछि. She has been cooking food or preparing food for 1 hour. Rajesh कालिठुरु सोइछि. Rajesh has been sleeping from yesterday. टिक्के भूल गला नहीं भूल हलानी ठीक अच्छी. फ्रॉम लास्ट नाइट कही पार किसी प्रोब्लेम नहीं सर. लास्ट नाइट रू चलती कम मुझे के भी संतोष has been studying mathematics from March. ठीक अच्छे. Rajesh has been preparing the video from February.
since February. ठीक अच्छी has been format. That means I'm talking about he, she, I'm putting any name, this carrying as has been. Whereas I was talking about I, we, you, they were carrying have. Now another is coming, that is had been. Yes, had been. Where to use had been? Had been हमें कोड व्यवहार करिवा. So these were talking about the present moment. Now think about a situation, guys. मो विषय भाबंतु. For example, मो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे माने 5 वर्ष पे काम करूथिली. मु काम करूथिली. दैट मीन्स एबे करूनी. 5 वर्ष पे करूथिली किंतु. I had been working in SBI for 5 years. That means आपणकर have किंबा has रो past sense जदि हो जाउछि, past form कोन had बस बीन टा लागियो. परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थला सेटा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस अनुसार को आ जाएगा. गाइस इन टेंस साइड वी कॉल इट पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. दैट मीन्स मुझे देखो आमे माने 3 वर्ष पई क्रिकेट खेलुथिलु. वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 इयर्स. से 2 घंटा पई पाठ पढुतला. पाठ पढुथिला. ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स. से घंटे पे रोषे करतला. शी हैड बीन कुकिंग फॉर 1 आवर. दैट मीन्स घटनाटी माने पास्ट रो आरंभ होला. फॉर एग्जांपल 2010 रे आरंभ होईची, कंटिन्यू करची 2015 पर्यंत. 2015 पर से कामटा आउ होउनी. 2010 रो जो कामटा होउतिला माने होउतिला मझिर ब्रेक नउतिला, पुणी होउतिला मझिर ब्रेक नउतिला, पुणी होउतिला. एटा 2015 पर्यंत चल. आउ किंतु एबे से काम जम्मा चलेनी. देयर इज नो रिलेशन विथ द पास्ट. द वर्क इज कंप्लीटली ओवर. इन ऑल दोस केसेस वी टेंड टू यूज गाइस हैड बीन. माने जो घटनाटा पास्ट रे स्टार्ट हेई एबे मध्य चलुची, फ्यूचर को मध्य एक्सपेक्टेशन अछि चलिबो. इन दैट केस वी आर यूजिंग हैव बीन. इन आई, वी, यू, दे केस हैज बीन, ही, शी, इट, नेम आपण ना ए सु चारटा केस लगी ही, शी आउ नेम रा बेसी व्यवहार करछु. इन दैट केस वी आर यूजिंग हैज बीन. वेयर एज हैड इज यूज्ड एवरीवेयर. से माने 10 दिन पई बुलिया को जाइतले. दे हैड बीन gone, they had been going for a picnic for 10 days. से माने 8 दिन पे क्रिकेट खेलते. They had been playing cricket for 8 days. राजेश 2 घंटा पे क्लास नौथला. राजेश had been taking the classes for 2 hours. जानी पड़ले गाइस. माने जो घटनाटी पास्ट आरंभ होला चलिला एवं कंप्लीटली सरी जाइछि आ प्रेजेंट किछि लिंक नहीं. दैट इज हैड बीन. आ प्रेजेंट रे जदी अछि एटा हम कोन बसेलु हैव बीन और एल्स हैज बीन. तो जानि परथिबे गाइस हैव बीन हैड बीन ए डिफरेंशिएशन कोन. एटा के हम जनरली परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहितो. हैव और हैज हेले प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, हैड हेले पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. तो कांसेप्ट क्लियर है ना गाइस. अंडरस्टैंड कले ना. बेले बेले पिला माने कंफ्यूज होंदी सर हाफ कोन हाज कोन हेटा प्रेजेंट हार्ड कोन ना सर पास्ट. तापरे बिन बसेला मात्र से परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्मेट को बोलो. तापरे भर प्लस आईएनजी बसियो. भर प्लस आईएनजी रे सब जगह कांस्टेंट. अपन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव करंतु कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव करंतु, दीटा कांस्टेंट. बेले बेले पिला कंफ्यूज होंदी सर ए फॉर्मेटटा आ को फॉर्मेट रे एक्सप्रेस करा जाय परिबो. हां ए फॉर्मेटटा हमर आगोटे फॉर्मेट रे मध्ये एक्सप्रेस करा जाय परिबो. दैट इज कॉल्ड बिन आवश्यकनी. जेमती मु 3 वर्ष पे क्रिकेट खेलुली. आई हैड प्लेड क्रिकेट फॉर 2 इयर्स. प्रेजेंट परफेक्ट ए पास्ट परफेक्ट. आई हैड प्लेड क्रिकेट फॉर 3 इयर्स कहि परिबे. एटा माने सेही सेंस टा जेमती मु 2 वर्ष होला भुवनेश्वर रे रहउची. आई हैव बीन स्टेइंग इन भुवनेश्वर फॉर 2 इयर्स. आई हैव स्टेड इन भुवनेश्वर फॉर 2 इयर्स. दीटा को ठीक किछि प्रॉब्लम नहीं. किंतु आम एटा बीन जेहेतु चैप्टरटा करूँ से जो आम हैड बीन फॉर्मेट एक्सप्लेन कलु ताकि आप बुझीपारे. बट द सेम थिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड समटाइम्स आल्सो इन प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म.
तो आई होप गाइज कनसेप्टा क्लीयर है आप प्रेजेंट परफेक्ट कौटी बसाऊँ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कौटी हो बिनटा कौटी लगुच हाव हाज हार्ड भितर तो निश्चित भल लगी कनसेप्टा टी क्लीयर हो गला लाइक बटन गोटे दे शेयर निश्चित कर सब्सक्राइब कर दिंतु रही फ्रेंड्स कमेंट निश्चित